All right, so yesterday we talked about activating groups, deactivating groups, and how they affect the properties of these things. So knowing how activating groups and deactivating groups work, can you tell me if if I start with chlorobenzene and I want to end up with this, then what do I need to do? Do I need a catalyst or do I not need a catalyst? Let's think about it. Is chlorine an activating group or a deactivating group? Chlorine is a deactivating. Chlorine के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जस्ट लाइक ऑक्सीजन रिंग के साथ ओवरलैप कर लेते हैं. उसकी दो implication है. First implication is that this bond becomes really strong. So compared to a normal carbon with chlorine bond, the bond between this carbon and this chlorine is actually much stronger than the bond here. That's the first thing. Why? Because the pi electrons of chlorine overlap with the cloud that we have in benzene, the delocalized. Yet, chlorine is a deactivating group. It pulls on the electrons, which means it makes the ring less reactive. So now you need stronger electrophiles to do the reaction. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. So we will obviously need nitro. तो nitro बनाने के लिए हमें nitric acid चाहिए, हमें concentrated sulfuric acid चाहिए, और हमें temperature less than 55 degree Celsius चाहिए. ठीक है, नाइट्रो बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, साथ में हमारे पास obviously water create होएगा. But do you see something unusual here? Chlorine is a deactivating group. If you have a deactivated group, where should the electrophile come? 3. 3. But यहाँ पे the electrophile has come to 4th. And we don't need to go into the detail of why that is in A levels. So just understand that halogens are deactivating and yet 2,4 directive. अच्छा, deactivating से rate पे क्या impact आता है? How does this affect the rate? Any ideas? Decreases. Rate decreases, exactly. So if I have deactivating group, the ring will become less negative, which means that now it cannot attack the things as much as it might without. ठीक है? So that's the main idea that I want to discuss as far as the activating and deactivating groups are concerned. The second main question that I want to discuss today is the idea of acidic behavior. So if you look at phenol, or it has OH, and that means that O, because O has pi electrons, those pi electrons overlap with the delocalized electrons here, the bond becomes really strong. So it is possible that this will break down and this will form O minus plus H positive. It will be a reversible reaction. And this is acting as an acid. Similarly, if we try to compare it with something like alcohol, let's suppose मेरे पास ये है, तो इसमें ये बन सकता है. Similarly, मेरे पास carboxylic acid हो सकते हैं, और carboxylic acid ये बना सकते हैं. So the question is, between these three, for example, which one is the strongest acid and why? And then, will another activating or deactivating group affect this behavior? मतलब वो कैसे इसको impact करेंगे? In fact, water को भी इनसे compare करके देख लेते हैं. Water भी तो acidic behavior show करवाता है. It produces H positive. तो वो H positive जो है वो acid का behavior ही है. So जरा इन तीनों को देखते हैं. And for now, I will like to table this. थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे. पहले जरा इन तीनों को देखते हैं. Yes. So I have a question. जब भी हम इनको like H positive और like product में divide करते हैं, तो is H positive the one which is like acting like as the acid, या फिर जो दूसरा वाला होता है? So acid is anything that gives H positive. So ये acid है, क्योंकि इसने H positive दिया है.
So like जो product दूसरा form हुआ था हमारा minus वाला, that would be the base फिर. हाँ, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज ये रिवर्स होगी और H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और वापस चली जाएगी. Got it. Thank you. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? इट्स इंपॉर्टेंट कि देखो अभी तो ये अपने तौर पे हैं, बट व्हाट इफ आई पुट phenol in water? Will water be the strongest acid or will phenol be the stronger acid? And if I put ethanol in water, acidic behavior किसका होगा? तो किसी भी दो एसिड्स को कंपेयर करने के लिए वी यूजुअली यूज द Ka या pKa वैल्यू, एंड देन वी ऑब्वियसली जज कि वो किस तरह से बिहेव करेगा. ठीक है. सो लेट्स सी, अगर मैं इनको अंडरस्टैंड करना चाहता हूं ना कि पीके वैल्यू या क्या है, तो वो तो बड़ा आसान है. आई कैन डू द कॉन्सेंट्रेशन वाले सारे रिएक्शंस एंड आई कैन फिगर आउट कि पीके वैल्यूज क्या है. टर्न्स आउट पीके वैल्यूज फॉर phenol is 10, for ethanol it's 16, and for water is 14. What does pKa value have to do with the acidic behavior? What does pKa value have to do with that? बहुत सिंपल सी बात है. pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड वीक होगा. That's all. It tells me which side the equilibrium shifts to. तो इसका मतलब ये हुआ कि between these three, tell me which one is the strongest acid? The first one. The first one, because इसका ये सबसे कम pKa है, तो it is the strongest acid. लेकिन ये क्या बात हुई? क्यों है ऐसा? For that we have to understand what do we mean when we say the equilibrium has a value of 10 या pKa value 10 है, or what does it mean for it to be lower or higher? So the idea here is again that a Ka value that is high shows the equilibrium is more towards the right, and that will have a lower pKa value. So lower pKa value का मतलब है equilibrium is more towards the right, कि मतलब forward reaction ज्यादा है and the backward reaction is not as much. Why does anything go back? Forward तो समझ आता है that this is pulling on oxygen, so the bond between hydrogen and oxygen weakens, and so hydrogen is gone. But ये वापस क्यों आता है? For that we have to understand कि कोई भी चीज वापस इसलिए आएगी क्योंकि this negative charge and this positive charge pull on each other, and so the bond is reinstated. यानी forward क्यों जा रहे हैं? क्योंकि the ring has overlapped with the oxygen's lone pair, and ring is pulling on this bond more, और उसकी वजह से hydrogen oxygen bond weak हो जाती है, वैसे भी वो polar है, and so hydrogen ion goes away. But the backward reaction depends on how strongly this thing attracts this. Now, what do we call this? In the backward side, this is a base, and this is also a base. Let me name them. हम इन bases को compare करते हैं. जो base ज्यादा strong होगी वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड पुश करेगी, जिसका मतलब है एसिड वीक हो जाएगा. गेट इट? अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो पीके वैल्यू राइज करेगी, एसिड वीक हो जाएगा. अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ज्यादा तो पीके वैल्यू फॉल करेगी और इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड. ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पे जब वो पहुंचते हैं तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं. सो लेट्स सी. This one is phenoxide. This one is ethoxide. This one is hydroxide. What is pulling on the electrons the most in phenoxide? Are the electrons coming towards oxygen or are the electrons going away from oxygen? Coming. Think about it. The ring pulls on electrons. Ring has delocalized electrons और वो उनमें नए electrons को incorporate करना बड़ा आसान है. So the electrons are actually shifted towards the ring. On the other hand, in ethoxide,
the electrons are shifted more towards the oxygen. Q, polar bond oxygen is going to pull on the electrons more. High electronegativity. Oxygen is the most electronegative thing in here. In this case, ring is the most electronegative thing. Ring electrons को pull कर रहा है. यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है. तो अब will this charge be more negative or will this charge be more negative? इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ जा रहे हैं रिंग में, तो इसका मतलब है दिस इज बिकमिंग लेस नेगेटिव. दिस इज पुलिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. ऑब्वियसली इफ इट इज मोर नेगेटिव तो ये H पॉजिटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो वो जल्दी से बॉन्ड करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड. लेकिन इसका चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, फिनॉक्साइड की तरफ चले गया, सॉरी द रिंग ग्रुप की तरफ चले गया. सो दिस इज बिकमिंग अ वीकर लेस नेगेटिव चार्ज, और लेस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो उतनी तेजी से वापस नहीं जा पाएगा. वी से that phenoxide is a weaker base compared to ethoxide, or the phenoxide is more stable than the ethoxide ion. Stable वही चीज है ना जो अपने आप को सस्टेन कर सके, चेंज ना हो. Phenoxide, because of this overlap of oxygen with the ring and less negative behavior of phenoxide ion, it cannot attract H positive as strongly. So वो बस पड़ा रहता है. On the other hand, ethoxide oxygen becomes more negative. It pulls on H positive more, so it reverses. So it is not as stable as the phenoxide. And so phenoxide can sustain being in the ion form instead of going back and becoming phenol. But ethoxide cannot sustain that. So ethoxide, the moment it gets an H positive, gets it, goes back and becomes the, what you call, ethanol. And hydroxide is right in there in the middle. ना उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना उसको इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे, वो right in the middle. So in the case of phenoxide, the equilibrium is more towards the right. In the case of ethoxide, the equilibrium is more towards the left. They are both weak acids, which means that they will both react with strong reactive metals like sodium के साथ ये दोनों react करते हैं. ठीक है. Similarly, अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो दोनों उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. और ये जो आइडिया है ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो इसको समझ लें कि किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम लेफ्ट या राइट की तरफ उसकी पोजीशन होगी, depends on how strongly the ions can attract and go back. And if the ions do not attract that strongly, then you will have the equilibrium more towards the right side. Okay? Any other questions? ये सबको समझ आ गया? Yes, sir. Perfect. Okay, let's do some questions now. Sir, I have some questions. Can I send them? Yeah, sure, of course. Will I? Okay. Here we have a reaction. Methyl benzene can undergo different reactions to form the product shown below. Okay. Methyl benzene hai. Tell me, is methyl more an electron donating group or an activating group or a deactivating group? Methyl is Activating. electron donating, activating. इसका मतलब है कि methyl benzene is more reactive as far as the electrophilic substitution या ring के अपने reactions are concerned than the other one. So reaction 1 and reaction 2, which of these reaction is happening on the ring? The reaction 2. क्यों? क्योंकि
यहां पर क्लोरीन आया है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह है. दिस इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ द रिंग, इट्स एक्चुअली अ रिएक्शन ऑफ द साइड चेन. सो दिस वन is free radical substitution and this one is electrophilic substitution. और इसका मतलब है कि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट यूज हुई होगी, इसमें कैटलिस्ट यूज होया होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट करना था. सो गिव द रिएजेंट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए हमें, और ऑफ कोर्स रिएजेंट का मतलब है कि क्लोरीन यूज होगी. इन द अदर वन क्लोरीन यूज होगी बट साथ में AlCl3 भी होगा कैटलिस्ट, एंड ऑब्वियसली इसको हीट भी करना पड़ेगा. नेम द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 हमने बता दिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन. कोई मसला नहीं है, हमारे पास मिथाइल बेंजीन है और इसमें हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं एक्सेस में, और साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा, जितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं सारे होंगे. सो CCl3 हो जाएगा और 3 HCl बन जाएंगे. Of course, the whole equation was not required. You just needed to mention the final product. Arene, I'll get to these questions in a bit. पहले मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ. Sure, sir. All right. Anti-inflammatory drug ketoprofen can be synthesized ऐसा सही है. कर क्या रहा है ये? Let's see. यहाँ पर बेंजीन में उसने ये पूरी चीज ऐड की है, और ऑब्वियसली कैसे ऐड की होगी, सब्स्टिट्यूशन की होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये. किसके साथ? ऑब्वियसली ये पूरी चीज होगी, ये जो चीज है ये पूरी यूज हुई होगी, यानी कि ये यूज हुआ होगा, बट इसके साथ क्लोरीन जुड़ा होगा जिसकी वजह से ये रिएक्शन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट. उससे अगले स्टेप में वो कह रहे हैं कि 2 नहीं 1 ऑक्सीजन रह गया. अच्छा, वैसे भी ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन उसने क्या किया है, इसको कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि अगले स्टेप में ये बनता है. तो अगले स्टेप में ये ब्रोमीन आई होगी ना, तो ब्रोमीन को निकाल के ये सारा कुछ यहां मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्टेप में डायरेक्ट तो ब्रोमीन यहां पे आके ब्रोमीन डायरेक्ट तो नहीं हम लगा सकते, अनलेस कि ये पूरा ही अभी आया हो, तो वो तो फिर स्टेप 2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. तो आई एम श्योर कि ब्रोमीन के अलावा बाकी सब कुछ टी है. सो आई विल सिंपली कॉपी दैट होल पोर्शन. दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, ब्रोमीन इसमें नहीं है, बाकी सब है. तो बेसिकली ये वाला पोर्शन नहीं है, बाकी सब है. अच्छा, उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया है कि ये ब्रोमीन खत्म होके अल्टीमेटली दूसरे स्टेप में COOH में कन्वर्ट हो गई है. ये हमने अभी नहीं पढ़ा, तो ये हम अभी के लिए छोड़ देंगे. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कैसे आप यहां पर इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं? हमें ऑब्वियसली इथाइल क्लोराइड चाहिए होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड हीट. यहां पे भी हीट होगा, and that is how we will be able to attach ethyl over here, जो यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है. सिमिलरली उस इथाइल में हमने ब्रोमीन ऐड की है, तो ये ब्रोमीन ऐड करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, तो अल्ट्रावायलेट लाइट होगी और ब्रोमीन मॉलिक्यूल यूज होगा, जिससे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ये बन जाएगा. तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगले रिएक्शंस अभी हमने पढ़े नहीं है, तो आई एम गोइंग टू लीव दोस आउट. अगला रिएक्शन बेसिकली ये है कि कैसे हम ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके एक कार्बन लेके आएंगे, और फिर उससे अगले स्टेप में हम कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड लाएंगे. वो हम अगले स्टेप में बाद में कभी पढ़ेंगे. ऑलराइट,